So what is the effect of temperature on enzyme activity? Enzyme, they show their best activity at optimum temperature range, that is 25 to 40 degrees Celsius. At higher temperatures, that is 60 degree or 80 degree or 100 degrees Celsius, the enzyme structure, it gets denatured. The hydrogen bonds present in the tertiary structural level, they get destroyed. So once enzymes, they get denatured, their normal activity cannot be restored. But when enzymes, they are taken to lower temperatures, they become inactive, and they can become normal, they can show their normal activity again if brought to normal temperatures or the optimum temperature range. जैसे कि हम फ्रीज में रखते हैं अपनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, तो लो टेम्परेचर पे ले जाके एंजाइम एक्शन नहीं होता एंड दे रिमेन फ्रेश फॉर, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, देयर टेस्ट रिमेन्स एज सच फॉर मैनी डेज, बिकॉज एट लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज डिक्रीज. और जब हम उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं तो दे बिकम एक्टिव अगेन. बट देर आर some exceptional cases are also. There are some bacteria which live in high temperature vents where the temperature is as high as 100 degrees Celsius. So those bacteria, they can resist these high temperatures because their enzymes, they can remain functional at these high temperatures. And there are cyanobacteria also which आर फाउंड इन ग्लेशियल आइस. तो स्नो के नीचे जो ये मिलते हैं, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव बिकॉज देयर एंजाइम्स, दे रिमेन फंक्शनल एट दैट टेम्परेचर. नेक्स्ट इज, what is the effect of pH or the hydrogen ion concentration on enzyme activity? Enzymes, they show their best activity in the optimum range, that is 6 to 7.5. But some enzymes, they can show their activity in highly acidic medium also. For example, we have done pepsin. Pepsin, which acts in the presence of HCl, gastric juice में जो पेप्सिन रिलीज हुआ था, it works at pH of 2, which is a highly acidic medium. Pepsin of gastric juice, it can work in, it can show its activity in highly activity medium. And the trypsin, which is found in the pancreatic juice, it shows its activity at a pH of 8.8. यानी कि बेस्ट एक्टिविटी तो शो करेंगे बिटवीन द pH रेंज 6 to 7.5. बट देयर आर एक्सट्रीम cases also. Some enzymes like pepsin, they can act at acidic pH of 2. And enzyme trypsin, which it can show its function, it is functional at pH 8.8 also. Now the next is the presence of poisons and radiations. Poisons and radiations, they also destroy the enzyme structure and they make the enzyme ineffective. For example, cyanide is a poison which deactivates the respiratory enzyme. तभी cyanide जो poison है उसको टांग पे रखते ही जो है वो डेथ हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी एंजाइम है, ये उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है. एकदम जैसे ही सांस आनी बंद होती है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रुक जाता है. जैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टॉप्स, तो एनर्जी प्रोडक्शन स्टॉप्स एंड द पर्सन डाइज. Next is the effect of activators. Some enzymes, they are produced in inactive forms.
इनएक्टिव फॉर्म्स यानी इनएक्टिव एंजाइम्स जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, zymogens, और दे आर कॉल्ड प्रो एंजाइम्स। जैसे हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। अगर किसी एंजाइम के नाम से पहले प्रो लगा हो या बाद में जन लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, दे आर inactive. Some of the enzymes they are produced in inactive form and they can become active in the presence of certain substances and these substances are called activators. एक्टिवेटर्स की प्रेजेंस में वो एंजाइम जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं। अब ये जो एक्टिवेटर्स हैं दे कैन बी सम मेटल आयन और दे कैन बी सम अदर enzyme also. These activators they can be some ions or enzymes also. For example which we have already done, the pepsinogen is inactive protein which is secreted in gastric juice and in the presence of hydrogen ions. hydrogen ion कहाँ से आए, गैस्ट्रिक जूस में जो HCl था वहाँ से, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl they get converted into pepsin, that is the active form, that is the active form of enzyme पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस. सो हेयर द हाइड्रोजन आयंस दे एक्ट एज एक्टिवेटर्स. There is another example where trypsinogen is another inactive enzyme in pancreatic juice. Trypsinogen gets converted to its active form trypsin in the presence of another enzyme enterokinase, in the presence of enzyme enterokinase. So एक बार अगर ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा तो रिमेनिंग ट्रिप्सिनोजन is activated by the active trypsin also.